Yes, we will start today's session. Is my screen is visible? Audio is clear? Yes, sir. So today we will discuss about types of communication. In previous classes, we studied about communication, what is communication, uh, some of the concept regarding communication, its concepts, meaning, and about effective communication. And also we also discussed about the types and different elements of the communication, different types of the communication in the K Park textbook. But today we will discuss in detail about types of communication. So communication involves a sender and a receiver of messages to perform function. The message is shared between two people. Either one reacts to the message or one does not react. It can say that communication is social and cultural togetherness. So types of communications are divided based on the following aspect. We will study detail about type of the communication. As communication requires two persons, sender and receivers. But in generally, if receivers response a response may be positive or negative, but if he should be response or he should give the feedback, otherwise the communication will not complete ideally. So that is the concept. So but in different situation, different conditions, different types of communications will happen. So that's why we are going through detailed communication types. So based on the transmission of on the message, so the message how we will transmit. So based on this, there are two types of communication. One is verbal and another one is non-verbal. Sender, receiver. This is message. Based on the transmission, how we will transmit this message to the receiver. So based on this transmission, whether it is verbal or non-verbal. So based on this transmission, we have two classification. One is verbal communication, second one is non-verbal communication. And based on relationship element. So based on relationship means sender and receiver relation. Based on this relation element also, there are four types of classification. One is interpersonal or dyadic communication, intrapersonal communication, group communication, and mass mediated communication. So he is a sender, he is a receiver. So if sender and receivers are different, then it is called as interpersonal communication. First one, or dyadic communication. Then send, usually in a characteristic of communication, we studied that communication needs the communication need minimum two people. But sometimes what happens, it is ideal character of communication, but sometimes we ourselves send some messages, or we ourselves think something, and we ourselves receive that messages or emotions. So in that time, the sender and receiver is the same person. For example, I am thinking about something else, my future, everything. Here sender is also same person and receiver is also same person. So this type of communication we called as intrapersonal.
So myself is a sender and myself is a receiver. So this type of communication is called as intrapersonal. Then group communication. What is group communication? He is the sender, single person. If number of people, more than 5 people are there, if he is sending two messages to these people, a group more than 5 people, then it is called as group communication. Then mass of mediated communication means a sender is sending his messages to the mass of the people, because we can't imagine how many people are there, which type of people are there, our target audience, who are the our target audience, we can't identify. So this is called as a mass communication. Mass communication. Sometimes it looks like group communication and mass communications are same, but they are different. Group communication में क्या होता है? They are group, here also number of more people रहता है, लेकिन ये group में कौन है? Who are the targeted population और targeted audience कौन है? हमको पता होता है. For example, classroom communication is a group communication because 100 बच्चे रहते हमारा classroom में. So here also number of students are more, but this is group communication because we know who are participants, who are our audience. और ऑडियंस कौन सा है, हम किसको बोल रहे हैं, कौन रिसीव कर रहे हैं हमारा मैसेज को, ये हमको पता चलता है ग्रुप पॉपुलेशन में. फॉर एग्जांपल, एज आई टोल्ड इन प्रीवियस क्लास आल्सो, अगर हमने ब्रेस्ट फीडिंग अवेयरनेस का बारे में अवेयर कर रहे तो द मदर्स हु आर लैक्टेटिंग पीरियड, दे आर ग्रुप ऑफ द mothers, we are giving the awareness, educating, communicating. So group communication is different. Mass means if you are telecasting any message information through TV channel, so here we can't particularly we can't tell that who is our audience. Children's also watching the TV, elders also watching the TV, young people are also watching the TV, and related person, non-related person. So everyone, the message will reach to the everyone irrespective of the our target or motto. So if you print in the a newspaper, so everyone will see that matter. So that type of communication we call as mass of mediated communication or mass communication. So based on purpose and style, पर्पस एंड स्टाइल. सो स्टाइल ऑफ कम्युनिकेशन, पर्पस क्या है, इसके ऊपर भी दो टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन होते हैं. फर्स्ट वन इज फॉर्मल कम्युनिकेशन, मींस द कम्युनिकेशन is anyone joining now? Hello, in between. So based on purpose and style also there are two types, formal communication and informal communication. In formal communication it is official communication. Official communication means particular organization or particular structure, whatever may be the structure or organization. So in there the formal communication will happen. For example, स्कूल में कुछ टीचर्स और स्टाफ का कम्युनिकेशन होना है रिलेटेड टू स्कूल रूल्स, इंफॉर्मेशन हो, करिकुलम एक्टिविटीज हो, कोई भी थिंग्स दैट आर गोइंग ऑन, वी कॉल एज ए formal communication related to administration or related to official things. What are the communications we do, that one we called as a formal communication. Informal means these are
नॉट नॉन ऑफिशियल, इसमें हमारा पर्सनल रह सकते हैं, हमारा सोशल थिंग्स रह सकते हैं, और नॉट रिलेटेड टू वेयर वी आर वर्किंग। अगर हमने स्कूल में वर्क कर रहे हैं लेकिन हम स्कूल का काम का बारे में नहीं बात कर रहे, दैट इज informal communication. So here also different, in this also different types of informal communications are also there. We will discuss one by one. So in formal communication there are 6 type of formal communication. So next classification is on the basis of direction, vertical, horizontal and diagonal communication. So we will see one by one what are these types. So first one, as we know that based on the transmission, verbal communication encompasses all communication using spoken words, unspoken words, as in case of sign language. Verbal communication में हम words बोल भी सकते, बात भी कर सकते, और written से भी हम communicate कर सकते, or we can use the sign language. So that is also considered as verbal communication. So हम बोल भी सकते हैं, लिख के भी दे सकते हैं, and we can use some sign language, signs. So that is also comes under the communication. For example, we all of us see this sign. So what is this sign? Indicates, all of you seen this sign? Danger. Even though it is not by seeing this sign, we will understood that it is dangerous. We don't go there. So that's why it may be unspoken words or it may be sign language. It all these three are will considered as a verbal communication. समझ में आ गया आपको वर्बल कम्युनिकेशन में क्या क्या आता है? हेलो हेलो, anyone can respond whether I am audible? Yes, sir. Okay. So non-verbal communication में क्या होते हैं? The tone, facial expression, body language, hand movements, eye contact. These are the non-verbal communication. So non-verbal communication includes but not limited to the body language. Often subconscious influence the most person interaction. The way one sits, stands, hand gestures, tone of voice, all carry message about our attitude and emotions. So these bodily movements, facial expression, gestures, eye contacts, and sometimes the voice modulation, voice pitch change. So these all considered as a non-verbal communication. So as we discussed, based on the relationship element, interpersonal or direct communication, it means the process which people exchange information, feelings, and meaning. It is a face-to-face communication between two people, person one, person two. They will face-to-face communicate each other. That is the interpersonal or direct communication. This is the most common one. So it is not just about is actually said, how it is said, then it is ideal and effective communication. अगर आप आमने सामने बैठ के बात करते, so then it is more effective communication. So one can get immediate feedback. Communication and ethics are important. So अगर दो लोग बात कर रहे, दो लोग communication कर रहे, so immediately feedback मिल सकते. ये दोनों बात कर रहे, communicate कर रहे, ये he will send the message, he will receive the message, and he can react or give the feedback to the sender. So immediate feedback is possible here. Then it may be formal or informal. अगर दो लोग बात कर रहे, person one, person two, the conversion between these two people may be formal. They are talking about what is the next plan, how we are planning for examination, how we will conduct the viva practical. That information is formal in communication, or informal, or they are talking, or they are just simply talking about their personal matters or other things.
So that is informal. So this interpersonal communication may be formal or informal, दोनों हो सकते हैं. Then this, it may be formal or informal and can occur anywhere through words, sounds, facial expression, gestures and postures. Sometimes दो लोग आमने सामने खड़े, they are not using any words, they are not speaking, even not writing, they are not doing the communication by verbal method, they are using the gestures, hand, they will raising the hand. One person raises the hand and another person sees the his hand in the group. अगर हमने देखते ना, अगर हम मैं किधर तो वेट कर रहे थे फ्रेंड को, so then I will raise the hand to identify easily. So that's why even this interpersonal dyadic communication can happen through these gestures, expressions, postures. So, but here what is the important is face to face or direct in between two persons, this communication will happen. That is the interpersonal or dyadic communication. This type of communication depends on the mutual relationship between two partners in terms of their status, communication, roles and skills. So this is the interpersonal or dyadic communication. All of you understood? Hello? Yes, sir. So these are different types of based on functions, different things के ऊपर communication को divide कर रहे हैं. So that's why you have to listen very carefully. अगर example a question may be asked like this: two persons are sharing their information through gestures. Then which type of communication is there? ऑप्शन दे सकते हो लोग. इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, verbal communication, or they may also give the non-verbal communication, and none of the above, or another one is other like mass communication. Then here which options you seems to correct? Two persons are sharing information through gestures. Then which type of communication it is? The first one, once again I will tell the first option is intrapersonal, second is interpersonal, third one is verbal, fourth one is mass communication. Which type of communication this is? I have changed the option in second time. Please listen. First option intrapersonal, second one is interpersonal, third one is verbal communication, fourth one is mass communication. Two persons are sharing their information through gesture. So which type of communication? It is called which type of communication? Interpersonal, sir. So because two persons are there, they are sharing gestures. So the same question they may ask in different way also. Two persons are sharing information through letters. Then which type it is called? So it is interpersonal. When there is a two persons are there, so whatever mode or method of transmission is there, whether verbal or non-verbal, it is the mainly categorized as a interpersonal. So if this in this question, if they have given interpersonal communication type also and non-verbal also, then both options are correct, because the gesture is a non-verbal one. This also comes in under the interpersonal communication. But sometimes what happens in usually in net like exams, sometimes multi options also they will given. For example, first option interpersonal communication and second option is non-verbal communication, third one is verbal communication, fourth one is mass communication. In these type of questions, they may give the multiple option like options. दोनों option को टिक कर सकते, वैसे भी question रहते. But as in our net exam, they can give the answers like option 1, answer A and B are correct, answer A and C are correct, answer A and D are correct, and none of them. If you completely know these
what I am telling, it comes under both interpersonal communication and non-verbal. Then only you will able to answer the option A and B are correct. So that's why to understanding the concept is very important. And in this communication, this type of question if comes, it will simple है लेकिन confusion कर सकते. So that's why it is very important to know in detail about types of communication. Even though it sounds like not that much बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन समझ में, लेकिन आंसरिंग करने में थोड़ा हमको दिमाग लगाना पड़ता है इसमें. Then intrapersonal communication. It takes place within the individual. It is meant to reflect oneself, to clarify something, self-orientation, known what true or false, good or bad. It might be descriptive or prescriptive. It is an individual learned idea. It is generally consistent values, so that often emotional. Intrapersonal communication का मतलब क्या है? मैंने अगर आज कुछ तो काम किया, उसका बारे में मैं सोचने लगा. अगर मैंने कुछ काम किया, मैंने सोचा ये अच्छा किया या बुरा किया. Myself, sender is also myself and receiver is also myself. So that's why this type of communication we called as intrapersonal communication. But in general, communication का ideal characteristic में what we studied, usually ideally two persons should be there. But here that condition is not fulfilling, but still the sender is there, receiver is there. But here the same person is both sender and receiver. That's why it is called as intrapersonal. Moreover, it is often called as emotional. Our emotions, our self clarity. इसके लिए हमने मनन, हमारा खुद का खुद विचार करते हैं, हमारा खुद का असेस किया, तो that is called intrapersonal. हमारा मन में हम क्या सोच रहे किसी को पता नहीं रहते, बट क्वेश्चन भी हमारा सेल्फ हमने करते एंड उसका आंसर भी हम ही ढूंढते. एंड इट मे बी डिस्क्रिप्टिव और प्रिस्क्रिप्टिव. डिस्क्रिप्टिव मीन्स कल से मैंने 5 बजे उठना है. सो दैट इज दी माई सेल्फ. सेंडर इंफॉर्मेशन इज ऑल्सो माई सेल्फ एंड रिसीवर इज ऑल्सो माई सेल्फ. कल से मैं अर्ली मॉर्निंग 5 बजे उठने का प्लान करेंगे. सो दैट इज प्रिस्क्रिप्टिव टाइप. डिस्क्रिप्टिव टाइप मीन्स मैंने आज क्लास में ऐसे किया और कुछ नया सीखा. सो वेदर इट इज करेक्टली सीखा नहीं सीखा, को क्या करना था बच्चे को. सो दिस टाइप ऑफ थिंकिंग इज कॉल्ड एज डिस्क्रिप्टिव. मोर एवरली इमोशनल. हमको मन में कुछ फेलियर हो गए तो कुछ कुछ सोच जाते हैं क्या करना. सो दैट टाइप ऑफ communication we called as intrapersonal communication. So based on concept they can ask, the student get failed in the exam. Student get failed in the exam and he planned that he should start study as early as possible from next onwards. So which type of communication? So ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते. तब हमको होना चाहिए इधर अकेले है पर्सन, स्टूडेंट, he himself thought, he himself planned for studying next onwards. So then we should answer the intrapersonal communication. So that's why understanding concept is more important here. And mass or mediated communication. Mass or mediated means mass. If the communication with mass audience is called as mass communication. It is used as a synonym for convenience. Convenience communication भी बोलता है, because convenience means, क्यों बोलता है? बहुत लोगों के लिए, mass people के लिए इंफॉर्मेशन पहुंचने के लिए कन्वीनियंस है. फॉर एग्जांपल अगर इलेक्शन डिक्लेरेशन हो गया, आज इस बार का लोकसभा का इलेक्शन डिक्लेरेशन हो गया. सो इलेक्शन डिक्लेरेशन कब हुआ, कैसे होते हैं, इन डिटेल हमको किधर से मिल रहे? टीवी से मिल रहे, न्यूज चैनल से हमको मिल रहे ज्यादा. उसके बाद पेपर से, न्यूज पेपर से मिल रहे हमको. सो दीज आर द टू मीडिया, दे आर गिविंग द इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेटिंग विथ द larger extent. That's why sometimes it is synonym for convenience communication also. The channel through which communication takes place is called mass media. The channel means here you can use the mobile phone, TV, newspaper. The channel through which the communication takes place is called as mass media. Agar either TV using as a channel, then TV is called as a mass media. Agar newspaper is used as a channel, then it is called as a mass media. In this situation, the newspaper is mass media.
So any mechanical device multiplies the messages and takes them a large number of people simultaneously is called as mass communication. एक मैसेज को लार्ज नंबर ऑफ पीपल को साइमल्टेनियसली, अगर मैंने गुजरात में बैठ के भी न्यूज सुन रहे तो मुझे भी सेम मैसेज मिलेगा, आप कर्नाटक में बैठ के सुने तो भी आपको सेम मैसेज मिलेगा. सो दैट इज साइमल्टेनियसली लार्ज पीपल को इंफॉर्मेशन देने का काम क्या करता है, दिस मास मीडिएटेड communication or mass communication. Its feedback is different from that of interpersonal communication. Interpersonal में क्या होते हैं, दो लोग रहते हैं, सेंडिंग एंड रिसीविंग रहते हैं, रिसीवर इमीडिएटली फीडबैक दे सकते हैं उनको. बट यार मास कम्युनिकेशन में है ना, इमीडिएट फीडबैक मिलना थोड़ा मुश्किल है. अगर मैंने न्यूज सुना, सो फीडबैक मैं टीवी वाले को देने का कभी कभी दे भी सकते, नहीं भी दे सकते. It is very it is not that much easily feedback, instant feedback नहीं मिलते इसमें. So and in different situation the feedback is also, अगर polling कर रहे हैं टीवी में online, then the feedback is instantly मिलता है. So but as compared to interpersonal, the feedback mechanism, feedback response is different in this mass communication. कोई कोई सुनता है, कोई कोई नहीं सुनता है, कोई कोई रिस्पॉन्स देता है, कोई कोई नहीं रिस्पॉन्स देता है. हियर अगर इलेक्शन 26 को हो रहा है, एवरीवन शुड वोट बोल के आपको टीवी में बोल रहे हैं, सो अगर ये न्यूज सुनने वाला सब लोग जाके वोटिंग किया तो दैट इज द फीडबैक और रिस्पॉन्स. सो रिस्पॉन्स इज हैपेंड लेटर ऑन. अगर अवेयरनेस कर रहे टीवी माध्यम से सब लोग वोट करना है, सो आज अवेयरनेस कर रहे 26 को, नेक्स्ट महीने में वोटिंग है, ये सुनने के बाद सेंडर्स दिस मास मीडिया इंफॉर्मेशन, अगर वोटर्स जाके सब लोग वोटिंग किया तो दैट इज द रिस्पॉन्स और फीडबैक. दैट चेंज इन द बिहेवियर इज आल्सो वन ऑफ द रिस्पॉन्स और फीडबैक फ्रॉम द दिस स्टिमुलाई और सेंडर. सो द फीडबैक may not be immediate in this mass media. Some people, even they listen the news or information, they will not go for voting. That is the response. They are showing the negative response. That is the thing. Radio, newspaper, films, magazines are example of mass communications. That's why the feedback is different from the interpersonal communication. कभी कभी हमको पता ही नहीं चलता है लोग क्या रेस्पॉन्स दिए, क्या फीडबैक दिए इन दी मास मीडिया कम्युनिकेशन. Then based on purpose and style, divided into formal, as I earlier told, it is established by the official things as the level of management, upper level of management, and official information lower level of staff के साथ official transfer information transfer के लिए this formal communication will help. The formal communication is 6 type. This formal communication को हमने 6 type में divide किया further. The first one, now we are discussing about types of formal communication. Formal communication में once again they are divided as 6 types. So formal communication में first type में क्या है, chain network. What is the chain network? Chain network in this communication, the information and message flow only up or down in a hierarchical chain of command. So first type or first model or first network in formal communication में क्या हो सकते हैं? These are the peoples. कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कोई कंपनी है, बड़ा कंपनी है, इधर क्या होता है, the message will go from one in the only one direction. ऐसे तो हो सकते हैं और ऐसे तो हो सकते. The information will go one from one, but in the only one direction, whether upward or downward, but it will, the information will go from one person to another person. So you are able to the chain market system. chain market system बोल के आप आज मार्केट में बिजनेस का एक बड़ा स्ट्रेटजी है chain market. इसमें क्या रहते हैं, अगर इस बिजनेस का बारे में और इस
प्रोडक्ट का बारे में मुझे पता चला, अजय को पता चला। अगर मेरे नीचे मैंने और किसी को इंफॉर्मेशन देके मेरे अंडर ले लिया, और ये आदमी क्या किया, उनको मैंने बोला आपके अंडर कितना लोग आते हो उतना फायदे आपको है। सो वो और एक को ज्वाइन किया इंफॉर्मेशन, एंड ये वाला डी। सो द इंफॉर्मेशन विल फ्लो फ्रॉम वन टू वन इन दी वन डायरेक्शन। अगर ए वाले ने बी बी को बताया ए ऐसे ऐसे करना है, बी वाले सी को बताया, सी वाले डी को बताया, तो ये वाले को क्या पता है, डी वाले को भी पता है, डी वाले फिर से आके इनको बी वाले को सी वाले को फिर से बोलने का जरूरत नहीं है, बस इंफॉर्मेशन आया ही ये से। समझ में आ गया? हेलो हेलो। So this type of network system we called as a chain network. All of you understood what is chain network? The information message will flow up or down in the one direction. So बेस वर्कर है एंड ये उनके ऊपर का आदमी को बोलता है, यूनिट का हेड को बोलता है, यूनिट हेड चीफ इंजीनियर को बोलता है, चीफ इंजीनियर ने मैनेजर को बोलता है, मैनेजर ने ओनर को बोलता है। सो लाइक दैट द इंफॉर्मेशन विल spread from one person to one person, because we are studying this network in the formal communication. That's why it is regarding to any organization, institution, any official matter. ये वर्कर ने कुछ तो प्रॉब्लम बताया, मशीन में कुछ प्रॉब्लम है फैक्ट्री में, then it will goes like this. So that's why it is called as a chain. It is in the form of chain, one to one, one to one. But it will goes usually up or down. In the some situation, it may in downward also. The owner should tell something about to manager, manager will tell the this supervisor will also tell this head person, and it will go to the employee. So like that the chain network means the one to one in the upward or downward direction the information will flow. Then star network. So what is the star network? The star network, under this communication, the information and message flow among the group members through a leader. In other words, the group members do not communication with each other directly, rely on the leader. इसमें क्या होता है? ये ग्रुप लीडर है, ए बी बी सी डी ई एफ, ये चार लोग मेंबर्स हैं। अगर कुछ मीटिंग अरेंज करना है तो ये ग्रुप लीडर क्या है, सबको मैसेज दे देगा कल मीटिंग है। सो द इंफॉर्मेशन मैसेज विल गोइंग टू द मेंबर्स, ग्रुप मेंबर्स थ्रू लीडर ओनली, लीडर ने मैसेज दे रहा है। सो हियर दीज मेंबर्स आर नॉट talking each other, but the information is they are taking from the leader. That's why it is called as star network. If you draw the is image, it will look like a star, somewhat star like structure. In this diagram you see this diagram, this is this indicating the star network. A is the leader, he is giving the information to this group members. अनदर वन प्रैक्टिकल एग्जाम लेना है तो अगर देखो आईसी मीटिंग, इंस्टीट्यूशनल एथिकल कमिटी रहते, सो क्या रहते, इंस्टीट्यूशनल कमिटी में चेयरपर्सन एंड मेंबर सेक्रेटरी रहता है। सो मेंबर सेक्रेटरी क्या रहते, ये एक्टिव पर्सन, ही विल अरेंज द मीटिंग्स, ही विल डू दी एवरीथिंग। सो मेंबर सेक्रेटरी क्या करते हैं हमको, ही विल गिव द मैसेज टू ऑल एथिकल कमिटी मेंबर्स। 24 को आईसी मीटिंग है, सो मेंबर सेक्रेटरी हमको मैसेज करते हो वेदर ईमेल और व्हाट्सएप ग्रुप में, 24 को एथिकल कमिटी मीटिंग्स है, एथिकल कमिटी मीटिंग्स का एजेंडा क्या क्या है वो एक फॉर्मेट में भेज देते। सो हम 12 मेंबर्स है एथिकल कमिटी में, सो वी 12 मेंबर्स आर नॉट टॉकिंग ईच अदर, बिकॉज मैंने इधर एक मेंबर है, दूसरा मेंबर दूसरा कॉलेज में है, so like that each members are not discussing each other, but the message
24 को आईईसी मीटिंग है और नेक्स्ट मंथ 3rd को आईईसी मीटिंग है. दिस इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल टू एवरीवन by leader, that is member secretary. So that's why this type of communication network we call as star network. Then circle network. What is this circle network? Circle network, in this communication the group members interact with the adjoining member only. For example, एक member है, एक member है, एक member है. So these members can talk with his neighbor member only. उनका बाजू वाले मेंबर के साथ ही वो कम्युनिकेट कर सकते. दिस डी मेंबर कांट गो टू दी बी मेंबर. इनके साथ इंफॉर्मेशन और मैसेज करने को नहीं होता है. ये वाला ई के साथ कम्युनिकेट कर सकता है, बी के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, बट ही कैन नॉट कम्युनिकेट विद डी एंड सी. दिस इज नॉट पॉसिबल इन दिस टाइप ऑफ कम्युनिकेशन. दैट्स वाई अगर ऐसे लोग बैठे, सो अगर उनका बाजू वाले लोगों के साथ ही वो कम्युनिकेट कर रहे हैं तो दैट फॉर्म्स द सर्कल नेटवर्क और सर्कल कम्युनिकेशन. यूजुअली वी विल डू, अपने हाथ हाथ मिला के एक सर्कल बनाते हैं ना. सो when we are doing circle, so our adjoining persons, we should join our hands with our adjoining or next member only. हमारा इधर एक लड़का है, इधर एक लड़का है, वो दोनों हाथ पकड़ रहे, इधर भी लड़का है हाथ पकड़ रहे, इधर भी. सो एडजॉइनिंग नेक्स्ट मेंबर को हाथी और पर्सन का हाथी पकड़ सकते, ये पर्सन इनका हाथ नहीं पकड़ सकते. सो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सर्कल नेटवर्क. सो मैसेज और इंफॉर्मेशन विल we can share or transfer with the next adjoining member only. That is the concept of circle networks. These type of communication is going in different fields, different contexts, but how exactly that is working we don't know the examples, but it is happening in the system. That's why these type of communications are explained in the this particular curriculum. ये हो रहे सर्कल नेटवर्क हो रहे, कौन सा फील्ड में हो रहे, कैसे हो रहे, हमको एग्जांपल पता नहीं होगा शायद, लेकिन दीज टाइप ऑफ नेटवर्क्स आर वर्किंग इन दी this particular situations. This is one of the type of formal communication. हो सकते हैं कोई ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा हो सकता है. So they can only possible to transfer information to the next member only. So that's why this type of communication network we called as a circle network. Then all channel network में क्या होता है? Under this communication, all members of a group are actively communicate with each other. It is the most decentralized type of formal communication. Formal communication में क्या है? देखो, ये आदमी इसको भी बात कर सकते हैं, इसको भी बात कर सकते हैं, चाहे तो इनके साथ भी बात कर सकते हैं. दिस इज मोस्ट डिसेंट्रलाइज्ड टाइप ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन. कोई भी किसी को जाके बात कर सकते. सर्टन ऑर्गेनाइजेशन में ये ऐसा पॉसिबल है. तो इफ यू अप्लाई द रूल्स एंड रेगुलेशंस अकॉर्डिंग टू द इंस्टीट्यूशन, कोई इंस्टीट्यूशन में क्या रहते, एक दूसरे के साथ बात नहीं करना रहते, डिपार्टमेंट, इंटर डिपार्टमेंट. So they people can communicate only in the next members. उनका डिपार्टमेंट में कौन है उनके साथ ही बात कर सकते. They can't go with the other department. But some colleges में क्या करते हैं, randomly you can go to the any department, any senior person, any. And so that type of freedom is available. That type of communication we called as all channel network. Here decentralized, कोई भी किसी के साथ जाके communicate कर सकता है. So this type of formal communication we call as all channel network. All channel means कोई सीनियर जूनियर के साथ, जूनियर प्रिंसिपल के साथ, प्रिंसिपल के असिस्टेंट के, किसी के साथ भी हम डायरेक्ट कम्युनिकेट कर सकते. इट डिपेंड्स ऑन द ऑर्गेनाइजेशन एंड इंस्टीट्यूशन. बिकॉज दीज आर टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन. को किसी की तरह का कम्युनिकेशन हो सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, और मल्टीपल टाइप ऑफ कम्युनिकेशन भी पॉसिबल है. इट इज नॉट लाइक दैट ओनली वन टाइप ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन विल हैपन देयर. सो ऑल फाइव type of communications are also applicable in the same institution in the different context and different situation. That is also possible. The next one is inverted V network. This is inverted V network type of communication. Under this communication, a subordinate communicates with his immediate superior as well as second superior.
दिस टाइप ऑफ कम्युनिकेशन नेटवर्क और इसमें क्या पॉसिबल है, अगर मैंने सबऑर्डिनेट असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ मेरा डिपार्टमेंट में, I am the assistant professor in the my department, Department of Swastarutta. Then he is my HOD. So he is my principal. So in inverted V type में क्या होता है, I can go directly to the HOD or I can go to the principal also. In this type of communication system, it is possible, they have rights to go to superior, or he directly go his next superior, immediate superior and second superior, because principal is superior for HOD and me also. But मुझे कंसिडर किया तो मेरा नेक्स्ट सुपीरियर कौन है, HOD है. So मेरा सुपीरियर क्या है, HOD. I can go through HOD or I can directly go to the second superior. So if you mark this, then it will look like a inverted V. So here also one, अगर मैंने हम दो लोग असिस्टेंट लोग हैं, so we can go to direct principal or direct HOD. If you see the structure like this, then it is called as inverted V. So that's why the name is inverted V network type of communication. So this is the इन्वर्टेड वी इसमें क्वेश्चन कैसे पूछ सकते हैं, फॉर एग्जांपल एक सिनेरियो पूछ सकते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर, he have any problem or any information, he is thinking to go with meet with his HOD, and next he is going to meet with principal. So then which type of formal communication is there? So अगर ऐसे तरह का सिचुएशन बना के क्वेश्चन दिया तो आपको इसको कैसे कॉन्सेप्ट समझना है, असिस्टेंट है, so he is able to meet with his immediate superior one and second superior person also, then it is called as inverted V network type of formal communication. You can easily mark if you understand the concept. So questions direct नहीं पूछ सकते, whether it is the V network is inverted V is a formal or informal. I say these are very simple type of question. अगर एक सिनेरियो देके whether it is which type of formal communication बोल के पूछे तो तब आपको कॉन्सेप्ट समझ में है तो ही समझ में आता है, नहीं तो you are not able to answer the questions. Then Y network. Y network, under this communication, two subordinates through hierarchical chain communicate with the superior. In turn, the superior communicates with the two superiors who senior to them. For example, हमने दो लोग और मैं असिस्टेंट हूँ, so मैंने HOD को मीट किया. So HOD will meet the principal or dean. Then dean will meet, because I am working in the university, for example this university, so I have writing one book. For example, I am writing one book, I need the introduction or forward for this book. I am assistant professor, then I will go HOD, then I will tell sir I am writing some book, we will go meet the principal sir and we will take the forward. Then I will tell the HOD and HOD will tell the sir हमारा assistant ऐसा book, then he will tell to the principal, then he will talk with registrar of the university or and vice chancellor of the university, because these two persons are important in the university organization. That's why, or anything, just I am giving example here, writing book. So any information or any matter, if it goes through this hierarchy, this manner, in this manner में information send हो रहा है, then that type of communication or network we called as a Y. It will look like a Y shape. It will look like a Y shape. That's why it is called as a Y network. कोई भी सिचुएशन में ऐसे हो रहे, सबऑर्डिनेट से उनका ऊपर वाले को जा रहे, उनसे फिर से उनका ऊपर वाले को जा रहे, then that person is communicating with other two persons, then it is called as Y type.
just this explanation. Two subordinates through hierarchical chain the communicate with the superior. In turn, the superior communicates with the two superiors. So assistant and HOD are communicating to the dean superior. He is superior for these two people, HOD and assistant. They are approaching the superior person. Once again, this superior person is approaching two superior person. More than him, two superior person को approach करते हैं. Then it is called as Y network or Y type of communication. Then these are the 6 type of usually in this 6 way the formal communication will happen, or information or message will transfer in this type, whether we know or we don't know that time, but these 6 types में this formal information communication होते रहते. So then we will talk about informal communication. So what is informal? Informal में ऑफिशियली मैटर कुछ नहीं रहते. अगर हमने डिपार्टमेंट में कुछ बातें करते बैठे, गप्पा मारते बैठे, सो दैट इज इनफॉर्मल. उसमें कॉलेज का, एजुकेशन का, हमारा वर्क के संबंधित कुछ मैसेज और बातें नहीं रहते. दे आर जस्ट फॉर इनफॉर्मल और पर्सनल और आवर फॉर फन, आवर एंजॉयमेंट, कुछ बातें करते बैठते. दैट इज कॉल्ड एज इनफॉर्मल कम्युनिकेशन. So informal communication is an unofficial channel resulting from operation of social forces at the workplace. थोड़ा बीच बीच में हम कुछ तो अलग बात करते हैं other than the work. That is that or in the society also we are facing each other and we will share some information, emotions. That type of communication we call as informal communication. So it is also called as grapevine. The another name is grapevine. It is called as a informal communication, grapevine, and supplements of formal communication. Sometimes this informal communication act as a supplementary of formal communication. For example, कुछ तो एग्जाम ड्यूटी डाल दिया हमको, मैंने डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, मुझे एग्जाम ड्यूटी डाल दिया. सो मैंने दूसरा हमारा इसके साथ मैंने क्या किया, मुझे नहीं होता सर, आज थोड़ा एक्सचेंज करेंगे क्या, कुछ तो अलग, कुछ पर्सनल मैटर, पर्सनल थिंग्स का शेयर करके हमने अगर ड्यूटी एक्सचेंज कर दिया, then it is also the informal communication is also acting as a supplement of formal communication. मुझे ड्यूटी एक्सचेंज करने के लिए कुछ ना कुछ मेरा सोशल पर्सनल प्रॉब्लम्स तो भी शेयर करना पड़ रहा है. दैट इज नॉट फॉर्मल, बट दैट इनफॉर्मल मैटर्स मैसेजेस आर हेल्पिंग फॉर माय फॉर्मल communication. Then that's why the informal communication sometimes supplements for the formal communication or helps for the formal communication. Then this Keith Davis investigated phenomena of this grapevine, that is informal communication. So here also they have given the 4 types of networks in the informal communication. First one is the single strand network. Under this communication, the information process from one person to another one. One member communicates with another member, in turn communicates to another. So एक आदमी दूसरा आदमी को बताते, ये आदमी इसको बताते, ऐसे ये आदमी इसको बताते. So this is single stand. एक सिंगल स्टैंड में जा रहा है मैसेज. दिस इज इनफॉर्मल वन. मैंने फॉर एग्जांपल मैंने एक आदमी को बताया, वो दूसरा आदमी को बताया, ऐसे एक से एक बातें करते जाते. वो कितना लोगों तक पहुंचते हमको पता नहीं. इट इज लुक्स लाइक इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का चेन के नेटवर्क के जैसे दिखते हैं, बट व्हाट इज द डिफरेंट देयर, द ऑफिशियल मैटर इज देयर, देन दे आर नोइंग कितना लोग मेरे नीचे है, कितना लोग चेन से जुड़े हैं, उनको पता चलता है. मेरे नीचे 300 लोग जुड़ गया है. बट हियर इनफॉर्मल में पता नहीं चलते, मेरा ये बातें कितना लोगों तक पहुंचा गया मुझे पता नहीं चलते, और किस किस को पता चले पता नहीं चलते. इधर इंटरेस्टेड पर्सन और अनइंटरेस्टेड पर्सन को भी ये मैसेज पास हुआ रहते. बट चेन सिस्टम में क्या रहते, अगर मैंने कुछ वेबिनार कर रहे, वेबिनार का बारे में कौन इंटरेस्ट है उसको ही इंफॉर्मेशन पहुंचते, वही रिसीव करते. बट ये इनफॉर्मल में क्या है, फॉर एग्जांपल कोई पॉलिटिक्स ने कुछ गलत काम किया, मुझे पता चला, सो मैं एक को बताते, वो दूसरे को बताते. सो कितना लोगों को पता चला ये इसका कैलकुलेशन नहीं मिलते. What is so that's why it is different from that type of formal network का चेन सिस्टम के साथ
सिमिलर लगता है, लेकिन दैट इज डिफरेंट, दिस इज डिफरेंट। उधर हमको कितना लोगों को पहुंचते, हु आर द ऑडियंस, एंड देयर इज ए ऑफिशियल मैटर। हियर हमको पता नहीं चलते किस किस तक ये बातें पहुंच गए। सो दैट्स व्हाई इट इज इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। बिकॉज कोई भी किसी को भी बोल सकते, फॉर्मल में तो अगर मेरा एग्जाम ड्यूटी के बारे में दूसरा लोगों को क्यों बताते। सो दैट्स व्हाई फॉर्मल में ऐसा हो रहा है तो दैट इज chain network, but here informal में हो रहे तो that is called as single stand, एक से एक, एक से एक, एक से एक information पास होता जाता है, that's one we call as single stand network. Then gossip network, gossip network का मतलब क्या है? अगर मैं है, ये मेरा फ्रेंड्स रिलेटिव्स कोई भी है, मैंने क्या करता, ये मिल गए मुझे रोड में जाने के टाइम, इनको मैं बताता ये वो आदमी ने ऐसे किया। सो नेक्स्ट डे ही विल मीट इन दी बस स्टैंड, देन आई विल टेल टू हिम, देन नेक्स्ट डे किधर तो आई विल meet him and I will tell the same matter to the different people gossiping about something. So then it is called as gossip network. Gossip network के अंदर क्या होता है? The communication member communicates non-selectively. A member having information passes it on everyone he meets. अगर मैंने आज बस स्टैंड जा रहा था, बस स्टैंड में कोई मिला तो ये आपको पता है क्या वो ऐसे किया, मैंने मैसेज पास कर दिया, बट दिस थिंग्स आर इनफॉर्मल वंस। अगर नेक्स्ट महीने मंदिर गया, मंदिर में कोई आदमी मिला मुझे, मैं देन द सेम इंफॉर्मेशन मैसेज आई विल टेल हिम आल्सो। सो द पर्सन इन ट्रांसफर द इंफॉर्मेशन और मैसेज whoever he will meet नॉन सेलेक्टिवली। मुझे पता नहीं था ये आज मिलता है इनको बोलना है, नहीं ऐसा मिला है इनको बोल दिया। ये मंदिर गए थे, इधर ये आते मुझे पता नहीं सर, ऐसा रैंडमली ही मुझे मिला, मैंने उनको बताया। सो दिस टाइप ऑफ नेटवर्क इज कॉल्ड गॉसिप नेटवर्क। इन सोशल में, सोशल कंटेक्स्ट में ये होता रहता है ना, बहुत लोगों ने उनका दूसरों का घर का बातें किसी के लोगों को कौन कौन उनको मिलता है उनको बोलते जाते हैं। सो दैट टाइप ऑफ नेटवर्क वी कॉल्ड गॉसिप नेटवर्क। सो दिस आर इंफॉर्मेशनल कम्युनिकेशन में होता है, बट एजुकेशन और हमको कितना हेल्पफुल होता है पता नहीं, लेकिन बट दिस इज आल्सो वन ऑफ द कम्युनिकेशन, वी डोंट नेग्लेक्ट दिस मेथड आल्सो। अगर देख लो वैक्सीन का बारे में कितना नेगेटिव, यूजुअली नेगेटिव बातें बहुत जल्दी गॉसिप नेटवर्क्स से कम्युनिकेट होते हैं। फॉर एग्जांपल वैक्सीन लिया तो इम्पोर्टेंसी होते, इम्पोर्टेंसी और स्टेरिलिटी होते बोल के बहुत गॉसिप, विदाउट साइंटिफिक रीजन ये बातें चल रहा था। सो एक पर्सन, एक मेल पर्सन ने दूसरों को बताया आप वैक्सीन मत लो, इससे इम्पोर्टेंस होगा, कोई भी मिले तो उनको बोलने लगा। सो दिस टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन मैसेज जनरली क्या है, द नेगेटिव टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन विल स्प्रेड इजीली बाय दिस टाइप ऑफ network, gossip network. Whether it is true or false, that is secondary, but they will easily spread. That type of communication, informal communication, we call as gossip network. Then probability network में क्या होता है? The information passes according to the law of probability. That is, one member communicates randomly with other, who in turn communicated to some other. So क्या है? Randomly एक person ने एक को meet हो जाते, then he will randomly meet with another person. So the same person here not meeting these two person, but then he is also not meeting sequentially, he is also randomly किसी उनको पता, मैंने आपको बताया आप किसी दूसरों को बताया, ऐसे टाइप ऑफ नेटवर्क्स स्प्रेडिंग ऑफ इंफॉर्मेशन वी कॉल्ड एज प्रोबेबिलिटी नेटवर्क। प्रोबेबिलिटी मतलब फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया, अगर आप हमारा एक कॉमन फ्रेंड को बताया, ये बी सी आर तीन फ्रेंड्स रहते, ये ने बी को बताया लेकिन ये ने सी को नहीं बताया था, लेकिन ये बी सी आर कॉमन फ्रेंड्स है, अगर बी ने सी मिला तो ये हम दोनों ये डिस्कशन किया आपका क्या है, ये बी ने सी को बताया, देन इट इज प्रोबेबिलिटी। देयर इज ए प्रोबेबिलिटी चांस द इंफॉर्मेशन शुड ट्रांसफर विद सी, बिकॉज ए बी सी आर फ्रेंड्स, देयर इज ए प्रोबेबिलिटी, द प्रोबेबिलिटी वर्ड इधर इसलिए आ गया तो प्रोबेबिलिटी इज देयर, ये का बात सी तक पहुंचने का प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। ये रैंडमली बी को बताया, अगर हमने प्रैक्टिकल ग्रुप में 10 लोग हैं, कुछ तो प्लान किया, एक लड़का ने एक स्टूडेंट्स को बताया, सो अगर नेक्स्ट वही ग्रुप मेंबर कोई मिला तो ये इनको बताते, ये फिफ्थ वाले को बताते, सो लाइक दैट देयर इज ए प्रोबेबिलिटी whom
he will contact. That's why it is called as probability network. There is a chance one person randomly communicate with another person and he will tell the another random person. These type of communication is called as probability network. Whether you understood probability network or not, अगर मुझे मेरा क्लास में देखो, अगर 2 बच्चे को पता चले तो प्रोबेबली अदर 10 बच्चे को भी पता होगा बोलते हैं ना, अरे इन 2 लोगों को पता चला बोले तो बाकी लोगों को भी पता चला ही होगा. तो सो दैट इज प्रोबेबिलिटी. वी कैन प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या, वी कैन थिंक पॉसिबिलिटी इज देयर. सो दैट टाइप ऑफ नेटवर्क वी कॉल्ड एज प्रोबेबिलिटी नेटवर्क. देन क्लस्टर नेटवर्क में क्या होता है, information passes selectively. One member communicates with only members whom he trusts. In turn, they pass it on the some other selected members. It is most popular type of grapevine communication and widely prevalent in organization. अगर मैंने कुछ एक ग्रुप ऑफ पीपल को और कोई पर्सन को whom I trust very much, I will tell the information. Then another member, one of the member, he will tell the message whom we will trust. Here the important word is trust. किसी को भी randomly information नहीं देता है. Here trust matters. Trust matters. Trust होना चाहिए. Whom we trust. For example, certain चीजें रहते हैं, अगर हमने रिलीजियस का, अगर कास्ट का कोई चीजें रहते हैं ना, हम एक दूसरे को रैंडमली नहीं बताते. मेरा आइडियोलॉजी क्या है, वो कौन मेरा आइडियोलॉजी, मेरा सेम कल्चर वैसे रहते, वो ग्रुप मैंने किन लोगों को ट्रस्ट करते हैं, उन लोगों को वो बातें बताते. सो इधर से एक मेंबर ने उन लोगों को ये बातें और इंफॉर्मेशन पास ऑन करते, these लोग are also trustable or this person is also trustable person. So if this type of messages are spreading or communication is happening, then it is called as cluster. Cluster means group. Cluster. In sampling also we will learn research cluster method of sampling बोलते हैं ना, cluster method of sampling. So cluster is one small group like क्लस्टर में रहते हैं. सो नंबर ऑफ क्लस्टर्स मिलके बड़ा हो जाते हैं क्लस्टर्स. ए क्लस्टर्स है, ए क्लस्टर. सो स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल. सो दैट इज द क्लस्टर. दिस इज द क्लस्टर नेटवर्क. बट दीज आर इनफॉर्मल टाइप ऑफ कम्युनिकेशन. इसमें क्या ऑफिशियल बातें नहीं रहते, लोगों का रिलेटेड इन जनरल बातें, इमोशनल बातें, उनका रिलेटेड बातें रहते. तो हाउ दिस कम्युनिकेशन विल स्टार्ट, व्हाई वी आर स्टडीइंग. अगर देखो दिस कम्युनिकेशन के बारे में हमको पता चले तो हमारा एम क्या है, हम क्या पहुंचाना सकते, वो दैट प्रॉपर कम्युनिकेशन हम पहुंच सकते. अगर हमने सम थिंग्स हेल्थ में कुछ नया कुछ कर रहे, देन वी कांट एजुकेट और वी कांट ट्रांसमिट द मैसेज और इंफॉर्मेशन इन एज ए फॉर्मल मैनर. फॉर्मल जैसे हम उनको अवेयर नहीं कर सकते. देन वी विल pass on the information in the one of the group member, then he will go for the other members. अगर हमने ट्राइबल्स को कुछ हेल्थ का बारे में बोलना चाहिए तो we should follow their culture, their respect, then the communication method will different. That is the concept. That's why the understanding the different types of communication is very important. If you read the communication and health chapter in K-Park, you will understand why these type of understanding. For example, we will see in the next mass communication में एक example पढ़ा था. अगर बहुत लोग यात्रा में कुछ फेस्टिवल में ज्वाइन हुआ रहता है, then the drama are in certain places, Yakshagana. Through Yakshagana also they are incorporating certain messages. They will send certain messages through that cultural activities. Then the people will get understand what is the importance. अगर टीवी में वोट करना है बोले तो भी, और कोई बोले तो समझ नहीं. बट यक्षगाना देखने आया वाला लोग में यक्षगाना में एक सीन ऐसा बनाते हैं, वोटिंग का इम्पोर्टेंस क्या है वो बताए. सो देन देयर थ्रू देयर कल्चर इफ दे गिव द मैसेज इंफॉर्मेशन, दैट इज more effective. That's why the different communication methods are important. We have to understand these different types of methods. Then last one, on the basis of direction of communication. Communication कैसे कैसे direct होता है. It is not formal or informal. It is based on direction. कैसे कैसे direction से
कम्युनिकेशन हो रहा है उसके बेस्ड ऑन द क्लासिफिकेशन बना है. फर्स्ट वन इज वर्टिकल कम्युनिकेशन. वर्टिकल मतलब ऐसे ही एक लाइन पे जूनियर से सीनियर, फ्रॉम लोअर टू अपवर्ड भी जा सकते हैं और सीनियर टू जूनियर भी कुछ कम्युनिकेशन हो सकते हैं. दिस टाइप ऑफ कम्युनिकेशन वी कॉल्ड एज वर्टिकल कम्युनिकेशन. इन जनरली किस में होता है दिस डायरेक्शन? फॉर्मल कम्युनिकेशन में हो सकते हैं. अगर डायरेक्ट प्रिंसिपल ने मुझे कुछ मैसेज भेज सकते हैं और मैं जाके प्रिंसिपल को. सो इफ हायर एंड लोअर एम्प्लॉय के साथ वर्टिकल डायरेक्शन में सीधा कम्युनिकेशन नहीं हो रहे कम्युनिकेशन हो रहे तो दैट वी कॉल्ड एज ए वर्टिकल. दिस टाइप दिस क्लासिफिकेशन मेड बेस्ड ऑन द डायरेक्शन, विच डायरेक्शन में जा रहे हैं उनका कम्युनिकेशन. ही इज इन द हायर पोजिशन, ही इज इन द लोअर पोजिशन. इफ ही कम्युनिकेट in to this person then it is called as a direction. किसमें आ रहा है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में. if this person communicating with, so overall this is a vertical communication. डायरेक्शन के हिसाब से क्लासिफिकेशन बना है. यार हॉरिजॉन्टल और लैटरल कम्युनिकेशन. हॉरिजॉन्टल मतलब क्या है? अगर मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ, मैं भी अनदर असिस्टेंट प्रोफेसर के साथ कम्युनिकेट कर रहा हूँ, so then it is called as horizontal or lateral communication. I am communicating with same level or same thinking person, or he is not higher, he is not lower than me. We both are same in the related with position or thinking, whatever. Maybe. If he is communicating with the same one, not higher, not lower, then it is called as a lateral communication. अगर मैंने फर्स्ट BMS स्टूडेंट हूँ, अगर मैंने फाइनल BMS को बात कर रहे हैं एंड जस्ट जूनियर BMS को बात कर रहे हैं तो इट कम्स अंडर दी वर्टिकल कम्युनिकेशन. अगर मैंने BMS मेरा क्लासमेट्स के साथ, मेरा सेम बैच का क्लासमेट के साथ मैंने कम्युनिकेट कर रहे तो दैट कम्स अंडर दी हॉरिजॉन्टल और lateral communication. Then last one is, this is horizontal communication. Last one is diagonal communication. Diagonal में क्या है? This is also formal type में भी हो सकते हैं. ये formal communication में अगर प्रिंसिपल आके बच्चे को डायरेक्ट कम्युनिकेट कर सकते हैं, असिस्टेंट HOD को कम्युनिकेट कर सकते हैं. सो डायगोनल में कोई भी किसी को भी आके मीट कर सकते हैं इन दी फॉर्मल सिचुएशन में, देन इट इज कॉल्ड एज डायगोनल. So this type of communication, this direction, diagonal communication is very free one. Usually formal communication में ऐसे situation नहीं रहते, फिर भी if it is there then it is very good. Student direct जाके principal को बात कर सकते हैं. Sometimes क्या है, स्टूडेंट्स उनका मेंटर्स बाद में क्लास टीचर ऐसा रहता है. कभी कभी if there is a rule, the student can directly go to the principal, or so if that is called as diagonal communication. कोई भी किसी के साथ communication कर सकते हैं in the formal setting, then it is most useful or most freely decentralized, we can call it. So this is the last type, that is based on the direction. They are divided the vertical communication, horizontal communication और diagonal communication. ये concept based question में आ सकते हैं. So that's why I am discussing this. So एक ही सिचुएशन अलग अलग टाइप ऑफ कम्युनिकेशन में आ सकते हैं. दैट इज द इम्पोर्टेंट. अगर एक स्टूडेंट ने सेम पर्सन, सेम फर्स्ट ईयर BMS लड़का ने फर्स्ट ईयर BMS के साथ बच्चे के साथ कम्युनिकेट कर रहे तो बात करे थ्रू टॉकिंग, then it comes under the interpersonal communication. It comes under the verbal because they are talking. Then it comes under the horizontal. Then it is, they are not talking about syllabus or related to study, they are talking about their other things, then it is informal also. At the same time this situation is suitable for these type, or these are applicable for this concept. So based on this scenario they may ask any type of question. So if you understood the concept, then you are able to choose the correct option. All of you understood? Any doubt? Hello?
आप एक बार रिकॉर्डिंग के थ्रू जा सकते हैं एंड और एक बार स्लाइड देख लो, वेरी इजी है, सिर्फ एक बार आपको सुनना पड़ता है और एक बार देन यू विल गेट क्लियर एंड इफ यू सॉल्व द क्वेश्चंस देन यू क्लियर अबाउट दिस कॉन्सेप्ट। बट थोड़ा इजी क्वेश्चन रहते, कंफ्यूजन होने का भी चांसेस बिकॉज लॉट ऑफ टाइप्स लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन रहते। सो सारे कॉन्सेप्ट एक क्वेश्चन के ऊपर हमने थिंक करके आंसर डालना पड़ता है, तो दैट इज द प्रॉब्लम, डायरेक्ट नहीं आते क्वेश्चन। एनी डाउट? हेलो, एनी डाउट और एनी कंफ्यूजन और